We are live and we can start. So, good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the cafe members, our founder Kavita Agarwal, respected board members, and our esteemed guest Dr Sudeshna Ganguly. So, आज के इस हमारे लर्निंग सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे मुश्किल के समय में हम अपना रिएक्शन कैसे कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं और किस तरह उस सिचुएशन को वर्स होने से पहले उसको कंट्रोल में ला सकते हैं. सो इसको आगे ले जाते हुए निशा जी अब हमें डॉक्टर सुदेशना के बारे में और इस लर्निंग सेशन के बारे में आगे और बताएंगे. थैंक यू. कितनी बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर के पास जैसे ही पेशेंट पहुंचता है और डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ मिनट पहले ले आते तो मे बी वी कैन हेल्प यू विद द थिंग्स दैट इज मोर बेटर फॉर द पेशेंट. तब उस समय लगता है कि काश हमें वो नॉलेज होना चाहिए कि इमरजेंसी के वक्त हम कैसे रिएक्ट करें. कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी को सामने से दे रहे हैं, वो कोलैप्स हो रहा है, बट एज अ कॉमन मैन हमें पता ही नहीं होता कि हम उन्हें मदद कैसे कर सकते हैं. तो उसी हेल्प को हम आज सीख सकते हैं. आज हमारा पूरा लर्निंग सेशन इसी के ऊपर बेस्ड है. उसके लिए डॉक्टर सुदेशना जो अपना MBBS जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से करके आए हैं एंड उसके बाद भी उन्होंने आगे मैनेजमेंट. यस मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको. मेरा MBBS जॉर्ज वॉशिंगटन से नहीं था. MBBS यहाँ आरजे कौर मेडिकल कॉलेज से था और उसकी बाद वाली जो पढ़ाई है वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंडर था. तो क्योंकि ये लाइव है और लोग सुन रहे हैं इसीलिए छोटा सा मैंने नहीं. एंड उसके बाद भी शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एक्सेलराई and she has done a decade of experience heading towards emergency department in leading hospitals, looking forward to learn to act during the emergency rather than just feeling sorry afterwards. I will like to invite Dr. Sudeshna herself to give the more details about the session. Dr. Sudeshna, over to you. Thank you so much, Nisha. A very good afternoon to all my soul sisters here. In Wiki, we use a wonderful term, soul sisters, and I think I can use it here also to connect to everyone. My appreciation to Kavita ji, Nisha, and the entire team for giving me this opportunity to connect to all the erudite, wonderful ladies here who have taken it upon themselves to understand, learn, and upskill. This, I think, is a wonderful, situation to witness for me as an emergency physician. And I consider it my privilege that I'm getting this opportunity to talk to all of you about basic life support and cardiopulmonary resuscitation. So, एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार. और इसके साथ what I'll do is I will share my presentation and try to, sort of talk a little bit within the limited time period that we have about the immediate steps that can be taken if we find that any individual has collapsed in front of us. If anyone has any foreign body or any obstruction in their throat, which is preventing them from taking breaths, or if we sustain some injuries such as burns at home, how do we manage? What do we do as immediate next steps? So over the next 60 odd minutes, I think I have 60 minutes, Nisha, maybe a little less, but over the next 50, 60 minutes, I'll be, taking you through this. So with that, I will share my screen. Is this visible? Yes. I am now converting it to presentation mode. Let me know if it is still visible to you. It is. All right. So what we are going to now learn is basics of life support. अगर हम लाइफ या जिंदगी की बात करें तो बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है. We will say that we as civilized human beings, we require a lot of things to survive. But अगर नेचर के थोड़ा पास जाए तो दो बेसिक चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती. एक दिल की धड़कन, दूसरी ये आती जाती सांसें. अगर इन दोनों में से कोई एक भी अटक जाए तो जिंदगी रुक सकती है. और इसी रोकने के जब हम कगार पे होते हैं, जब जिंदगी खत्म हो जाने के कगार पे होती है, तब हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर उनमें ये नॉलेज, ये स्किल हम डेवलप कर सके एज अ कम्युनिटी,
then we can take this initiative. When we find that a person has collapsed in front of us, we can try and give basic life support to that individual, ताकि जब तक कि वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे या एक अस्पताल में पहुंचे, जब तक कि डॉक्टर्स उनको देखे, उससे पहले as lay persons, as community individuals, as responsible citizens of the nation, we can support our community members at their time of most critical need. So what is sudden cardiac arrest? Now, sudden cardiac arrest is just what I described. When my heart stops beating, plus minus my respiration, that is my breathing movements, have also stopped. And unfortunate part is that this can happen at any age, any body, और एक ये यहाँ पे missing है. It can be anywhere. ये जरूरी नहीं है कि ये चीज मुझे किसी डॉक्टर के चेंबर में हो, किसी अस्पताल की ओपीडी में हो, या फिर किसी आईसीयू में हो, जहां पे मुझे स्पेशलाइज्ड हेल्प तुरंत अवेलेबल है. Which is why globally it has been found through extensive research that if lay persons, by lay I mean here non-medical people, with a little bit of training can support resuscitating, or I would say the term resuscitation means to give life support. To give life support to this collapsed individual who has unfortunately sustained a cardiac arrest till he or she can be conveyed for specialized help. जब तक कि ना वो स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे, जब तक कि ना वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे, नर्सेस के पास पहुंचे, तब तक हम as community members can also do something for them. And that is what we are trying to discuss and learn here today. ये कुछ examples हैं of what we can do. हम पूछ सकते हैं कि क्या हम क्या कर सकते हैं? हम तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हमने नहीं सीखा. क्या हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल बचा सकते हैं. यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टोरीज हैं. अगर आप देखें, there's one gentleman, Chris Miller. He was at the age of 15. और ये एक बैंडमेट था, एंड उन्होंने कंप्रेशन ओनली CPR सीखा था, जो आज हम भी सीखेंगे इन गर्ल स्काउट्स कैंप. एंड ये क्योंकि ये स्किल सीखी हुई थी, तो इस बच्चे की, ये जो 15 साल का बच्चा है क्रिस मिलर, इसकी जिंदगी बचाया जा सका because he was given CPR, he was given chest compressions right at the point when he collapsed. You didn't have to wait for an ambulance to pick him up and take him to the hospital. और ये हम बाहर के देशों की बात कर रहे हैं, जहां पे आई थिंक नाउ वी आर ऑल फेमिलियर विद दिस नंबर. 911 जैसा एक नंबर होता है जो कि यूएस का इमरजेंसी नंबर है. ऐसे ही नंबर डेवलप्ड वर्ल्ड में हर किसी कंट्री के पास है, जहां पे आपके बुलाने पे 5 से 10 मिनट तक विद स्पेशलाइज्ड पैरामेडिक हेल्प एम्बुलेंस पहुंच जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली हियर इन इंडिया वी स्टिल डू नॉट हैव दिस परवेसिव फैसिलिटी. अगर आप भारत देश को सोचे, इतना विशाल और महान देश है हम लोगों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक हमें वेट करना पड़ता है. कभी कभी तो आधा घंटा, 1 घंटा वेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लोकेटेड, वेदर यूर इन अ मेट्रो सिटी, यूर इन अ टायर 2 सिटी, यूर इन अ विलेज, द डिस्टेंस माइट बी ह्यूज. You are not in contact with healthcare service at all. तो हमारे देश में तो इस चीज की और भी ज्यादा रेलेवेंस, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. या और भी काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे रसल वॉसब्रिंग. He was at the age of 36 only, a crime lab investigator who was saved by a co-worker. डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सहकर्मियों ने इनकी जान बचाई. Ralph Randon, at the age of 14, collapsed during a high school football practice. अब सोचिए, एक जिंदादिल बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, एकदम हेल्थी है, फिट है, उसको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई. A volunteer coach ने रिस्पॉन्ड किया और उसकी जान बचाई. Brian Duffel, at the age of 41, collapsed during a swimming pool workout. There was a paramedic nearby who could save his life. This I am only telling you to set the stage, to set the context. अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि हम इसको क्यों सीखें, तो जवाब आपको इस स्लाइड से मिलेगा. ये तो हो गई बाहरी देशों की बात. थोड़ा हमारे देश पे आते हैं. This is what generally happens in India. मुझे नहीं पता हमारे यहाँ पे कितने लोग ऐसे किसी सिचुएशन से या ऐसे किसी वाक्य से आप जुड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखी हुई है कि कहीं पे कोई कोलैप्स कर गया, भीड़ तो जमा हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हर कोई हर किसी को बोलता है कि भाई किसी को तो बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ. भीड़ जम जाती है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते. तो अगर आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं,
आई थिंक आर एम शुड बी कि आज हम कुछ तो एक दूसरे से सीख के जाए, और मेरा प्रयत्न यही होगा that I will be able to tell you about the basic steps that you can take when you are faced with such a situation. लेकिन ये CPR, cardiac arrest, resuscitation, these are familiar terms for me, but they can be very unfamiliar to you. आपको लग सकता है ये बात किस चीज की कर रही है. So now that I have set the context of why this is communally relevant to us, I will move on to tell you a little bit about the science behind it, and then we will go and see how it is exactly done. Now, is this a huge problem? Should we know about cardiac arrest? Yes, we should. Heart disease kills more than people each year than even cancer. 1 in every 29 deaths, as per the US statistics, is due to cardiac arrest and heart attacks. हर साल करीब 2,30,000 से 3,25,000 लोग cardiac arrest के शिकार होते हैं, and only 7.6% survive. And this 7.6%, mind you, is not a national statistic. मैं इंडिया की बात नहीं कर रही. हमारे यहाँ पे डेटा की थोड़ी प्रॉब्लम है हमें. That's why we sometimes have to rely on Caucasian data. And this is a Western data which shows us how relevant and how huge this problem is. And वहाँ भी, with all the training, with all the knowledge building, with the experience that they have, with the extremely advanced emergency medical services which they have, उनकी survival rate 10% से कम है. So आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारे यहाँ पे हालत क्या ही होती होगी. आगे जाते हुए थोड़ा सा फैक्ट और फिक्शन को अलग करने की जरूरत है. हम ज्यादातर कुछ स्टीरियोटाइप्स कर देते हैं कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो सकती है. हालांकि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक बात नहीं है. Heart attack can lead to cardiac arrest, and I will differentiate between the two in a minute or so. But first, allow me to give you the differences between myth and reality. Stereotypically, हम सोचते हैं कि मेल पेशेंट होंगे, बूढ़े होंगे, थोड़ा ओवरवेट होंगे, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह होगा, मेडिकल हिस्ट्री में एक हार्ट अटैक या फिर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम या दिल की कोई बीमारी का कुछ तो होगा उनके हिस्ट्री में. और ज्यादातर ऐसे लोग मतलब छाती में पेन होगा, छाती में दर्द होगा, फेंट हो जाएंगे, और ऐसे ही लोगों को कार्डियक अरेस्ट होती है. कुछ हद तक शायद हमारी बॉलीवुड फिल्में भी इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पे हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे ही एक स्टीरियोटाइप्ड फिगर को कार्डियक अरेस्ट होती है. लेकिन रियलिटी ये है कि ये चीज औरतों में उतनी ही हो सकती है जितना कि मर्दों में. मेल एंड फीमेल आर बोथ गिवन टू हैविंग कार्डियक अरेस्ट. किसी भी एज में हो सकती है. कुछ देर पहले हमने देखा 14 साल का बच्चा और 41 years old male. So 14 and 41 both were on the spectrum of having cardiac arrest. ऐसा हो ही सकता है कि कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं हो. अगर मैं बोलूं तो अभी यहाँ मुझे भी बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. I really hope not, because then that will at least cut short our session. But it can happen, unfortunately, to anyone without even any known risk factors. कार्डियक हिस्ट्री की गुंजाइश नहीं होने से भी I can directly present with a cardiac arrest. मेरी दिल की धड़कनें रुक सकती हैं बिना मेरे कोई भी इतिहास के. I need not have any history in the background. Often there even may not be any symptoms, which is why cardiac arrest can happen anywhere. शॉपिंग मॉल में हो सकती है, बस स्टैंड में हो सकता है, कैफे में हो सकता है, बात करते हुए हो सकता है, सोते हुए हो सकता है, कभी भी हो सकती है. So ये stereotypes जो हमारी ideals है, that it is only in elderly males who are overweight, typically with risk factors, with history of cardiac disease, ये आज थोड़ा सा हमें change करना पड़ेगा. And I was looking at all the respected participants here, and I can more or less understand that we have all crossed a certain age. अगर मैं average यहाँ का age निकालूं, तो it will be 35 plus. So I don't want to sound like an alarmist, लेकिन हम सब की, you know, the clock is ticking. And it is time that we become aware कि हमारी health शायद वैसी नहीं रही जैसे 10 साल या 15 साल या 20 साल की उम्र में होती. हालांकि उस उम्र में भी हो सकती है. Anyway, coming to the next point. Cardiac arrest is not heart attack, but heart attack can lead to cardiac arrest. This is a very important point that we need to understand. Why do we need to understand this? Because हमें distinguish करना पड़ेगा, differentiate करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा between having a heart attack and having a cardiac arrest. Cardiac arrest तब है जब मेरी दिल चल ही नहीं रही है, मतलब दिल की धड़कनें रुक गई. Simple words में बोलूं तो the heart has stopped.
और ऐसा इंसान जिनकी दिल की धड़कनें रुक गई हैं अनफॉर्चुनेटली, वो कभी भी कॉन्शियस नहीं होगा, बी टोटली अनकॉन्शियस। और काफी वक्त ऐसा हो सकता है, काफी टाइम ऐसा होता है that there will be no previous symptoms। हालांकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट गैस्प कर रहा हो, जैसे ऐसा अगर एक आध आया और फिर बंद हो गया। So this is the most critical emergency situation that a person is ever likely to face in his life। अगर मैं ये सर्वाइव कर जाऊं तो ऐसे ही होगी कि जिंदगी मिल गई दोबारा, ये जिंदगी खत्म होने जैसा है। अगर मिलती है दोबारा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा, इस जन्म का यहाँ पे जो भी कार्य था, जो भी वाकया था, वो बंद हो जाएगा। और ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जितना डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, उससे कई ज्यादा डिपेंड करता है उन लोगों पे जो उनके आसपास है जब उनको ये इंसिडेंट होती है। बिकॉज एज आई सेड, I will not have a cardiac arrest within a doctor's chamber, within a hospital. I might be miles away, kilometers away from a hospital. I might be eons away from any kind of specialized help. Heart attack, on the other hand, जहाँ पे दिल की जो नसें हैं, उन नसों में ब्लॉक आ जाती है। The veins get, the arteries get blocked. ये नसें जो बंद होती है, इसमें क्या होता है, पेशेंट कॉन्शियस होगा, वो आपसे बात कर रहा होगा, लेकिन उनको सांस की तकलीफ, छाती में दर्द, पसीना आना, उनको बात करने में दिक्कत होगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे हमारे इंडिया में तो पर्टिकुलरली इसका कल्चर ही है कि हम बोलते हैं कि गैस का दर्द हो गया, लेकिन ये गैस की दर्द नहीं होती है। गैस का दर्द अगर होता भी है तो बहुत अलग है, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकता है। लेकिन एक हार्ट अटैक जो है, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे सीने में कुछ रखा हुआ है, कुछ पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ है, और इतना खराब पेन तो शायद ही कभी हुआ होगा। So these are all, important points of heart attack, because we often tend to neglect our symptoms. हम सोचते हैं थोड़ा गैस है, थोड़ा इनो ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा कल खाना कम खा लूंगा, लेकिन हो सकता है कल नहीं आए, क्योंकि हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को जन्म दे सकता है। A heart attack, a major heart attack, can lead to cardiac arrest at any point in time. While I'm concentrating on cardiac arrest today, why am I speaking of heart attack? The reason number one is I want you to be able to distinguish between the two, कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक चीज नहीं है। दूसरी बात है कि आज हम जितने भी यहाँ गैदर्ड हैं, हम जाके हमारे घर वालों से जब बात करेंगे, जब इस बारे में हम आपस में चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे इस चर्चे की वजह से, इस नॉलेज बिल्डिंग की वजह से किसी एक की जान बच जाए, और वो उनको पता चले कि उनको हार्ट अटैक हो रही है, ये गैस वगैरह कुछ नहीं है, उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर्स की सलाह लेनी। Right? So cardiac arrest is essentially where the heart has stopped, the patient is unconscious, there can be no previous symptoms, it will be sudden, and the patient would either be gasping or not breathing at all. इससे आगे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, कोई सवाल अब तक? Anything which is not clear? Any questions, any comments that anyone might have? अगर है तो हम थोड़ा सा उस पर पॉज कर सकते हैं, या फिर मैं आगे जा सकती हूँ for the next part of it. All right. If you have any, yes, I yes, wanted to Kavita? ask something. How to distinguish between this, this gas pain or the heart attack? Is there anything which tells us that, like you mentioned, कि उसमें आपको लगेगा कि आपके हार्ट में कुछ रखा हुआ है, but Right. बार गैस के पेन में भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाके पता चलता है कि ये गैस का पेन है। So what do you suggest? Even if, we are not sure, we should rush to the hospital, right? Yes, Kavita, that is absolutely right. I understand your question. There is nothing sacrosanct. मतलब ऐसा नहीं है कि I can put it in a word of, in a definite word, कि ये है तो heart attack ही है। काफी वक्त ऐसा होता है और काफी पेशेंट्स पे, फॉर एग्जाम्पल, वी आर अ लॉट ऑफ लेडीज हियर, एंड अनफॉर्चुनेटली लेडीज ऑफन डू नॉट प्रेजेंट विद द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। हमें वो जैसे पत्थर रखा हुआ है सीने पे, शायद हम सीने पे बहुत सारे पत्थर लेके चलते हैं पूरी जीवन, इसीलिए ये अलग से नहीं पता चलता, बट वी डू नॉट हैव दीज टिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। डायबिटीज के जो मरीज हैं, डायबिटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट इंडिया इज इन डायबिटिक पैंडेमिक। डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको काफी वक्त दर्द फील नहीं होता, बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन उनको लगता है हल्का सा ही दर्द है,
मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो हमारे पास आते हैं और जब मैं उनको इमरजेंसी में देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ खास दर्द तो नहीं था, अब बोल रही कि बहुत कुछ हो गया लेकिन मुझे तो पता नहीं चला। उन लोगों को खास करके ना ये गैस और ये हार्ट अटैक में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई इफ यू हैव अ पेशेंट who has certain risk factors, जैसे मान लीजिए उनका एज अबव 30 भी अगर है, 35 के ऊपर अगर है, 30-35 के ऊपर, उनको डायबिटीज है, उनको मान लीजिए थोड़ा सांस फूलने की प्रॉब्लम है, उनको एक परसिस्टेंट मतलब वो जा नहीं रही है, अबीनो वगैरह आप दे दिए, थोड़ा आप खाना कम खा लिए या जो भी आपने घर के नुस्खे आजमाए, लेकिन उनको राहत नहीं मिल रही, सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर ये सिम्टम हो रही है, इट्स अ रेड फ्लैग, rush your patient to the hospital. In these cases, I would say it is good to over triage rather than under triage, meaning thereby, if you go and find out that you've only had gastritis, you can come home and celebrate. But if you don't go, then you, or rather that individual, might not have a tomorrow. So we need to be very aware of this. So moving on from here, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकती है. The cause matters. Before we go into how we manage a cardiac arrest, थोड़ा सा हमें जानना है कि इसके पीछे का कारण क्या है. इसको हम दो भाग में डिस्टिंग्विश करते हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी. अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग समझे तो प्राइमरी मतलब जो उसी के कारण है, दैट इज द रीजन. प्राइमरी है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं. सेकेंडरी इज कि ये मैनिफेस्टेशन है, ये कार्डियक अरेस्ट जो मुझे हुई है इसके पीछे और एक कारण है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है, हार्ट काम कर देना बंद कर देता है, माय हार्ट इज जस्ट कम टू अ स्टैंड स्टिल, लेकिन ऑक्सीजन भरी हुई है, मैंने सांस ली थी लेकिन हार्ट बंद हो गया. हार्ट बंद हो गया तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन मैंने लिया था वो मेरे पूरे बॉडी पे नहीं जा रहा है. और यही पे होता है कि अचानक से आदमी कोलैप्स कर जाएगा. आपके सामने खड़ा था, आपसे बात कर रहा था, अचानक उसने बोला कि कैसा लग रहा है, एंड द पेशेंट कोलैप्सेस. दैट इज अ सडन कोलैप्स व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट. सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट इज जहां पे पहले मेरी सांस रुकती है या फिर किसी कारणवश सांस अंदर ठीक से नहीं जा रही है या फिर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जैसे कि चोकिंग, व्हिच इज वन ऑफ द important topics we will discuss today. मान लीजिए मैं कुछ खा रही थी और मेरे यहाँ पे सांस लेने की जो हमारी नली है, सांस नली में कुछ अटक गया, तो फिर क्या हुआ कि मेरे अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं रही. अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो हर शरीर का हर अंग इंक्लूडिंग द हार्ट रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू बी एबल टू पंप. हार्ट को भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी पंप कर देना बंद कर देगा. सो दिस इज सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट. सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट इज जहां पे किसी कारणवश ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, the heart has stopped pumping due to lack of oxygen. On the other hand, primary cardiac arrest is where the heart just stops pumping, but the blood still has some amount of oxygen. This will lead to unexpected collapse. Secondary cardiac arrest is where the heart stops pumping due to lack of oxygen, such as पानी में डूब जाना, किसी चीज का सांस नली में फंस जाना, या फिर कोई ड्रग की वजह से हो सकता है कि ऑक्सीजन का आवन जावन जो है वो बंद हो गया है, इस कारणवश हमारा कार्डियक अरेस्ट हो गया. सो इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट. यहां तक क्लियर है? क्योंकि इसी डिफरेंस के ऊपर आगे जाके हम क्या करेंगे उसका डिफरेंस आएगा. ऑलराइट, लेटर ऑन आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन अगेन कम बैक टू दिस. नाउ कार्डियक अरेस्ट हम अब तक बोल रहे हैं, अब इस टर्म को मैं थोड़ा सा और क्वालिफाई करती हूँ. इट इज कॉल्ड आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, OHCA. हम इस OHCA को लेके कंसर्न्ड है. देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, जहां पे मेरी कार्डियक अरेस्ट हो रही है हॉस्पिटल के अंदर. हम क्यों कंसर्न्ड नहीं है? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद हैं जो आपको देखेंगे. वहां डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, whose job is to resuscitate you if anybody has cardiac arrest. However, 70 to 80% of adult cardiac arrest happens outside the hospital and they are primary cardiac arrests. So, हमारे primary और secondary में 80%, in fact 80 to 85% is due to primary cardiac arrest, and this is largely OHCA or out of hospital cardiac arrest.
So this is the huge segment that we are concerned about. Now coming back to what can we do? ये सब कुछ तो हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, out of hospital cardiac arrest हुआ, primary cardiac arrest हुआ. We understood that cardiac arrest is heart coming to a standstill. We come back to the golden question, what can we do about it? What we can do is chest compression, only CPR. I will explain each point. Chest compression, यानी कि छाती के ऊपर दबाव करना, in order to manually pump out blood. हार्ट को हम पंप बोलते हैं ना. Normally क्या होता है, नेचर ने मैकेनिज्म दी हुई. As I am talking, I am not thinking about my heart pumping. Thankfully, it is pumping on its own. But if today my spontaneously pumping heart stops, then it will require outside energy to help it. That is to provide compression in order to manually pass blood out of the heart to the rest of the body. That is the meaning of chest compression. Here we are saying chest compression only, which means सिर्फ chest compression से हम लोग CPR करेंगे. What is CPR? CPR is cardiopulmonary resuscitation. Now we come to this term, that is cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation means when my heart has stopped and my breathing has stopped, the management of the patient that is done in such critical situation. Resuscitation means to manage, to resuscitate. So cardiopulmonary resuscitation is a broad term that includes management of a patient who is in cardiac arrest, which means the heart has come to a standstill and the patient is not breathing. Here, however, for us, for lay persons who are not trained in any form of medical science, we give only chest compression. अगर हम only chest compression दे रहे, then what are we leaving out? कुछ तो हम छोड़ रहे हैं, तो हम उस पे भी आएंगे. लेकिन पहले देखते हैं ये chest compression only CPR क्या है और हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं. So हम मदद क्यों नहीं करते? What stops us? So what stops us is basically why we are coming to compression only CPR. First and foremost, mouth to mouth resuscitation या mouth to mouth breathing देने में हम hesitate करते हैं. Especially in the Indian culture, it can be very difficult, religiously, socially, for me to give mouth to mouth breathing to another individual. हमें ये डर होता है कि हमारे इस वजह से पेशेंट को कोई हार्म तो नहीं हो जाएगा. कुछ मालूम है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, पेशेंट ऐसे मतलब बेहोश पड़े हुए हैं और उनके छाती के ऊपर हम कूद रहे हैं. अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो जाएगा? हमारे ऊपर ब्लेम तो नहीं आएगा कि हमने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म? आर वी एबल टू परफॉर्म इट प्रॉपरली? क्या हम ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे? जो कंप्रेशन हम देंगे, क्या उससे पेशेंट को कोई भी मदद होगी? Sometimes we might be physically unable to do it also. Because if we look at a grown adult, compressing the chest is not so easy. और यहाँ पे हल्के से compression देने से नहीं चलता है. Because अगर हम हल्के से देंगे तो वो blood निकलेगा नहीं heart से. Here, as I said, manually you are pumping blood out of the heart. What is the solution then? The solution is what I am coming to. Mouth to mouth अगर आपको breathing नहीं देनी है, हालांकि cardiac arrest में दो चीजें बंद होती है. एक हार्ट काम करना बंद कर दिया, दूसरा मैं सांस नहीं ले पा रही. लेकिन I'll go a little back. What did I say? Sorry. What did I say? अभी भी ब्लड में ऑक्सीजन है, सांस चल रही थी जब तक कि ना हार्ट बंद हुआ. तो इसीलिए अगर हम सिर्फ हार्ट को मैनुअली कंप्रेस करके उस ब्लड को सर्कुलेट भी कराएं तो भी बहुत है और इससे पेशेंट की बहुत ज्यादा मदद हो सकती है. हालांकि ये कब काम नहीं करेगा? सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट. इसीलिए मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंसेस बताई थी. लेकिन पहले हम सिर्फ कंप्रेशन ओनली सीपीआर का ही ये करेंगे. आर वी हार्मिंग द पेशेंट बेटर देन द पेशेंट बीइंग डेड, राइट? अगर मेरे सामने कोई कोलैप्स कर गए हैं, क्या ही आप करेंगे? जो हो गया है उससे बुरा होगा. मेरा हार्ट काम कर देना मतलब बंद हो गया है, मैं सांस नहीं ले रही हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता. इसके आगे जो भी हम करेंगे in good faith, you will be protected by the Good Samaritan law. So do not be worried about legal consequences. हम सोचते हैं कि हम ठीक से कर पाएंगे कि नहीं. It's actually quite easy. We will learn the steps in a little while. और अगर आप physically enabled है, disabled है, मान लीजिए कि मेरी wrist में फ्रैक्चर हुई है,
मैं नहीं कंप्रेशन दे पाऊंगा, एटलीस्ट डू योर बेस्ट एंड ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए जैसा हमने देखा कि एक बुजुर्ग गिरे हुए हैं और सब उनको बस घेर के खड़े हैं। ये भीड़ नहीं चाहिए। इससे कुछ बेहतर अगर हम कर सके, then we have fulfilled our duty as human beings, let alone anything else. So, why compression alone works? It has been found to save a lot of lives. It is drastically and dramatically better than doing nothing at all. और इससे क्या होता है कि आपके चेस्ट कंप्रेशन में कोई इंटरप्शन नहीं होता। अगर मैं सांस देने जाऊं तो उसके लिए टाइम लगता है। उस वक्त मैं कंप्रेशन नहीं दे सकती, या तो मैं छाती पे कंप्रेशन दे सकती हूँ या फिर सांस दे सकती हूँ, unless and until there are two people and both are willing to give resuscitation to the patient. So कोई भी कंप्रेशन हम नहीं बंद करके अगर सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन दे, सांस के लिए उस वक्त उतना बॉदर नहीं करे, प्राइमरी आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में you will be doing no harm to the patient. So lungs are already full of air, the blood is full of oxygen. Circulation is the key. ऑक्सीजन है, फेफड़ों में ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन है, वो चल नहीं रही है, वो पंप बंद हो गया है. So please give chest compressions. Start compression only CPR if you find that a patient or an individual has collapsed in front of you. आज का मेरा पूरा इस डिस्कशन में अगर एक मैसेज लाउड एंड क्लियर अगर मैं बोलूं तो यही है. Please try and overcome your hesitations. If you find a patient completely unconscious, collapsed in front of you, at least start giving chest compressions. Any interruptions in chest compression will also stop blood flow to the brain. Now I come to the third concept of the day. Why are we so concerned? क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर मेरा पंप बंद हो गया है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है. और इसमें सबसे ज्यादा और सबसे सेंसिटिव अगर कोई ऑर्गन है तो वो है हमारा ब्रेन. हमारी पूरी जिंदगी जो है इन नसों पे टिकी हुई है. और हम बोलते हैं ना कि दिल से सोचेंगे, लेकिन दिल से सोचने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है. इसीलिए शायद नेचर ने दिमाग को दिल से थोड़ा ऊपर रखा है. और ये इंसानी दिमाग जिस पे हम इतना गुरूर करते हैं, इसको सिर्फ अगर 5 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तो मैं एक ह्यूमन बीइंग से एक वेजिटेबल बन जाऊं. आई विल टर्न into a vegetative person with no brain functions, literally, if my brain is globally deprived of oxygen for as short as 5 minutes. If my heart has come to a complete standstill and there is no chest compressions being given and there is nil circulation in my system, then it takes about 5 minutes only to cause global hypoxic damage to my brain. और ये जो डैमेज है इससे उभरना बहुत बहुत मुश्किल है. Patient will have a very, very long stay in the hospital, a very long stay back at home, and will have a very poor quality of life. So, in order to save the brain, in order to preserve the brain, we need to start giving chest compressions, ideally as soon as there is a cardiac arrest. How we will do it? The steps we will come. Why compression only CPR? That I think I've already explained. This was first extensively researched in the Arizona Seva Heart Center. And they found that we need not actually spend time in trying to learn to give breaths. We as laypersons can also give only chest compressions. And that would also give a lot of benefits to a patient who is in sudden primary out of hospital cardiac arrest. All right. Now I think all the terms are clear. किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट, परफेक्ट लेडीज. नाउ इतने देर से बात कर रही हूँ चेस्ट कंप्रेशन ओनली. करना क्या है? I don't know if all of us have seen that very, very, humorous Hindi movie. I'm right now forgetting the name. But उसमें एक डायलॉग था जो कभी-कभी हम लोग दोस्तों में मजाक में बोलते हैं कि अंथनी बनो मतलब क्या करूं? अभी ये chest compression देना है तो क्या करना है? What exactly do I need to do to successfully give chest compression to resuscitate a fellow human being who is going through the most critical phase of his or her life? In fact, life will not remain if I don't give this right at this time. So let's look at the CPR process flow, ladies. First and foremost, check response. Before doing anything, we need to actually confirm that whether
the patient actually needs resuscitation or not. All right? Need assessment. हम लोग बहुत कुछ जिंदगी में करते हैं और करने के बाद कभी कभी पता चलता है कि इस चीज की तो जरूरत ही नहीं थी. तो इससे पहले कि हम लोग कुछ करें, compressions दें, we need to know whether the compressions are at all needed. So how do? You shake the shoulders of the individual gently and ask, are you all right? ये आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं. आप मेरे shoulders पे टैप करेंगी और पूछेंगी, भाई साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Ma'am, are you able to hear me? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? See if the patient responds. Response हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से अभी आपको respond कर रही हूँ वैसे ही कोई respond करे. Because there are other causes of loss of consciousness also. अगर मेरी sugar level dip हो जाए तो भी मैं unconscious हो सकती हूँ. हो सकता है तभी patient आपको पूरा sentence में ना बोल पाए. लेकिन suppose ऐसा भी अगर कुछ आए तो you know that at least you know the patient has heard you. If the patient has heard you, which means blood is going to the brain and it has been processed. कि सुदेशना मुझे बुला रही, आपको समझ में आ गया, इसका मतलब cardiac arrest तो नहीं हो सकता. That is why I've established. Cardiac arrest is where the heart stops. Patient is completely unconscious and the patient is not breathing or only gasping. Okay? So if the patient responds, then you can leave as you find him, find out what is wrong and quickly go to the next step, which you have to go to even if the patient does not respond. Respond करे चाहे नहीं करे. Next step is very important. Shout for help. Gather help. You, me, nobody can resuscitate an individual on their own. And that holds true even for doctors, for nurses, no matter where you are. You might be in a state-of-art, world-class institute in their most advanced critical care unit, but you cannot resuscitate a patient alone. Human beings are not meant to do anything alone, excepting maybe a few tasks. Resuscitation is not one of them. You need to call for help. So shout for help. So your first step is check response. Next step, call for help. Next step, start chest compression. Okay? You have a patient who suddenly collapsed in front of you. You do not find any response on that individual. Do not waste time in doing anything else. Shout for help and then start chest compression. Before starting chest compressions, there is one more step, but that's meant for more specialized people. That is to check for the presence of a pulse. ज्यादातर हम familiar हैं कि नस यहाँ देखते हैं. कार्डियक अरेस्ट के टाइम में गले की नस देखी जाती है. लेकिन अगर ये आपको don't try it please, don't. ये जो नसें हैं ना, they are huge, they are very big arteries and it provides blood supply to your brain. So don't touch or don't press on any of these arteries without proper precautions. ये नस देखने की एक स्टेप है जो 10 सेकंड तक हम लोग देखते हैं. 10 सेकंड बस. लेकिन अगर आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है या फिर आपने कभी वो नहीं देखी है, it is all right. You can start chest compressions. If the patient starts moving, you can always stop your chest compressions. It's all right. You need not waste time in looking for a pulse. What you need to do is give chest compression. कहाँ पे देंगी? This is the midline. अगर हम फील करें, चाहे किसी का भी फिजिक कैसा भी हो, यहाँ एक हड्डी आपको फील होती है, एक बोन फील होता है. This is the breastbone. ये एकदम सेंटर में होती है. तो वो midline आप पकड़ लीजिए and the next line crossing it at the level of the nipples. For ladies, it might be a little bit difficult to understand because breast tissues might be of different sizes. But if I think of a male chest, यहाँ एक male mannequin के chest में दिखाया जा रहा है. ये आपका central line है, midline है आपका chest का, and that midline has to be crossed by another horizontal line at the level of the nipples. मान लीजिए छाती के बीचों बीच. अगर मैं छाती पकड़ूं तो कहाँ से? ये जो गला है, गला के यहाँ पे जो एक डिप होता है ब्रेस्ट बोन के ठीक ऊपर, you can feel that right up to your diaphragm. मतलब जहाँ पे छाती खत्म होती है और हमारा एब्डोमेन का शुरुआत होती है, तो उसके मान लीजिए बीचों बीच. So one horizontal line at the level of the nipples, one line vertical in between. That is the spot where you have to give chest compressions. How will you give? This is the position. You have to kneel down beside the patient. और आपको जो force लगानी है, वो force आपको आपके shoulders और hips से लगानी है, not from the elbow or the wrist. The force has to be from your shoulder.
In fact, when you lean on the patient, you are utilizing your own body weight to give chest compression. Okay? How will you give chest compressions? Link your hand like this. इस तरह से link करेंगे आप हाथ को. हाथ की ये जो heel है, the heel of the hand, that must be on this spot. On this particular spot will be the heel of my hand. The other hand will be linked on top of it. My arms are going to be ramrod straight, and I have to give the force from my shoulder and hips, leaning over the patient, utilizing my own weight to give chest compression. How much will you compress? You have to compress by at least 2 inches. 2 inch तक आपको दबानी है. A grown male chest, if you have to compress by 2 inches, then it's a job. Unless and until you position yourself correctly, you will not be able to give the requisite force. और क्या इसकी rate होनी चाहिए? It will be at least 100 compression per minute. मतलब 1 minute में 60 seconds में आपको 60 compressions नहीं देने हैं, उससे ज्यादा देने, 40 ज्यादा. So 100 compressions आपको देनी है 1 second में या फिर 60 seconds में, और हर compression आपको 2 inch तक छाती को दबाना है. As a result, what will happen? Blood will be forced out of the heart and maintain circulation. Is this as good as your natural heartbeat? No. But as we said, that something is better than nothing. And this is quite a lot. All right. So this is basically how you give compression only CPR. आदि breathing, 2 चीजें हैं ना मूलभूत to maintain life. एक है दिल का धड़कना, दूसरा है सांस का चलना. तो जब आप ये कंप्रेशंस दे रही हैं, तब आप देखने की कोशिश करें कि क्या आदमी सांस ले रहा है. वो सांस नहीं ले रहा होगा in a full blown cardiac arrest. What will happen is gasping. ऐसा एक होता है कभी कभी वो भी नहीं होता. आप अपना कंप्रेशन चालू रखें. ऐसे गैस्प के वक्त कंप्रेशन बंद ना करें. There is no indication for stopping compressions due to gasps. All right? If you are trained and you are willing, then you can give breaths as well. तो आप पूरा cardiopulmonary resuscitation करेंगे. Cardio, that is chest compression, heart का part. Pulmonary is the good term that we use in medical science for breathing. Cardiopulmonary means heart and breathing. Breathing के part अगर आपको सही लगे, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, अगर आप कर सकती हैं, तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेंगे. कैसा? एक लंबी सी आप सांस लेंगी, विक्टिम के आप नोज को बंद करेंगी, and your mouth has to create a seal on the victim's mouth, and you blow out air. But you might have reservations, as I said, socially, religiously. You might have lack of training. You might be hesitant. Never mind. Give compression only CPR. But अगर आप में ये क्षमता है कि आप कंप्रेशन के साथ साथ ब्रीदिंग भी देना चाहती हैं, तो आपको एक साइकिल मेंटेन करनी पड़ती है. आप 30 बार कंप्रेशन देंगी, मतलब छाती पे जो दबाव है वो 30 बार आप करेंगी. उसके बाद आप 2 बार सांस देंगी पेशेंट को. 30 compressions, 2 breaths. This is called universal compression is to breathing ratio, or compression is to ventilation ratio. 30:2. Okay. So this is a nutshell cardiopulmonary resuscitation or basic life support. So what you do is you check for response, you shout for help. While help arrives, you locate the site for chest compression and start chest compression. If you are not trained for it, you can actually avoid checking for the pulse in the neck. Otherwise, if you're trained for it, then you can check for pulse. Otherwise, go in for chest compression. Method of chest compression has already been detailed to you. The rate and the depth is very, very important. You need to compress at a depth of 2 inches and at a rate of at least 100 per minute. If you are able to, willing and trained for this, then you can give breaths as well. Alternation of chest compressions with breath has to be in a ratio of 30:2. Let us not confuse rate and ratio. Rate is the number of chest compressions that you give in a complete minute. Ratio is when you're alternating compression with breaths. ये आपका 30:2 होना चाहिए. At this point, I will just take a break, and I'm running short of time. So I want to show a video. I think that will be useful, right?
because whatever I've spoken out, if that can be seen, then I think that would be helpful. So allow me a minute, ladies, to share my screen to reflect the video. I am still not very familiar with the Zoom, unfortunately. Just hold on a second, please. I will take you there. Share sound. Visible? Yes. Screen visible? Okay. Yes. Now hold on. This is basically a video that has been taken from public domain. It has been placed there for training and upskilling by AHA, that is American Heart Association. That is the source for this video, and it is for demonstration purposes only. I would request you to look at this in order to understand what are the actual steps that we follow or carry out while giving chest compressions, along with breaths. Here you will be shown along with breaths. Okay. The foundation for resuscitation of cardiac arrest patients is high-quality basic life support. It's critical that you successfully perform these skills because effective advanced cardiovascular life support depends on them. These skills help save lives. High-quality CPR maintains blood flow to vital organs, especially the heart and brain. The components of high-quality CPR include adequate compression depth. Remember to push hard, compressing at a depth of at least 2 inches. Make sure you position your body over the patient. Good body position, with the shoulders serving as the fulcrum over the chest, will help you use your own body weight to perform compressions. Consider a step stool if necessary to achieve this position. Adequate compression rate. It's important to push fast by compressing at a rate of 100 to 120 compressions per minute, allowing complete chest recoil between compressions. Minimizing interruptions in compressions. Healthcare providers must minimize interruptions in chest compressions. This includes any pauses to deliver ventilations. When healthcare providers interrupt chest compressions, coronary perfusion pressure decreases dramatically and remains very low until compressions are resumed. It takes several compressions to build enough pressure to achieve an adequate coronary perfusion pressure necessary to get ROSC. And finally, avoiding excessive ventilation. The AHA recommends the use of audio-visual feedback and prompt devices during a resuscitation attempt or during training for real-time monitoring of CPR quality. The first skill we'll demonstrate is combining 30 compressions with 2 ventilations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I have just paused in order to, check. Are there any comments, questions? I know the first part was a little bit technical, but they were just explaining what I have done for, say, around the past half an hour. Agar koi patient collapse karta hai, sudden collapse in adult is in 70 to 80% of cases due to primary cardiac arrest. The heart has just stopped, but there is still adequate amount of oxygen in the blood. So if you are not comfortable with giving breaths just as it was given here, you can give only compressions. This is a background which they set, and now what they are demonstrating is how to give chest compressions in breath. जैसे आपने देखा, he is adequately positioned. उसके shoulders, hands, back, बिल्कुल straight. And the force is coming from using the shoulders as a fulcrum, and that fulcrum should pass through your hips. अगर आप अपने wrist या elbow से देना चाहेंगे, it will never be compressed through 2 inches. So you have to position yourself correctly and then give compressions. And those who are trained, those who have the necessary equipment, can also give 2 breaths. 30 compressions followed by 2 breaths. Okay? Let's now go back to the video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So let's build on these skills. We'll now illustrate two healthcare providers assessing and performing high-quality BLS, including the use of an AED. The scene is safe. Are you okay? Are you okay? We need more help. Call for backup and bring the defib. He just checked for pulse. This is what I was saying, checking for pulse. So did you note? He first checked for response. He sent someone else to get help. Then he's checking for pulse. For layperson CPR, as per the 2020 guidelines, which came out just about 3 years back, we'll have a revision on this in 2025. You can go ahead and start compressions if the patient is unconscious and has no response at all. It has been found that even if, say, the patient had a very feeble pulse and you did give some chest compressions, there is no harm done in the long. अगर मान लीजिए बहुत faint pulse हो भी, अगर आपने chest compression दी, you will not be doing any harm. So for laypersons, you can just go ahead and give chest compressions. After, of course, you have checked response and called for help. No pulse. He's not breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Attach pads to patient's bare chest. 3. Okay, so the rest of the video was very technical, which does not apply for us, but I think it was very clearly demonstrated. Of course, I will pause here to take questions. That what you need to do is first check response of the member, call for help. That is very, very essential. हम लोग कभी भी एक ऐसे पेशेंट को अकेले resuscitate नहीं कर सकते. Once you've called for help, if you have the skill, if you have the capability, then you check for a pulse. Otherwise, for a completely unconscious, non-responsive patient, you are well within your rights to start chest compression. Chest compressions have to be started at the rate of 100 per minute and a depth of 2 inches. Every time you need to compress hard and you need to compress fast. In order to do that, you must be adequately positioned next to the patient at a correct level. If you have the necessary equipment, if you have the training, if you have the will, then you can give either mouth-to-mouth breathing or a mouth-to-mask breathing like it was shown here. They have a pocket mask, which they were placing on the patient's mouth and giving out breaths. Need to take a deep breath yourself, pinch the nose of the victim and breathe into the victim's mouth. If you are doing that, then the rate changes to ratio. 30 compressions is to 2 breaths. So this is the universal protocol for giving basic life support in any patient who has suffered sudden cardiac arrest in an adult. For children, these policies and these processes are a little bit different. उनके लिए थोड़ा सा fine tuning करना पड़ता है. उनके लिए rate, ratio, depth वगैरह सब कुछ अलग होता है. But here, as part of today's discussion, we are not discussing children. So we are only discussing adult, and this is the adult protocol for basic life support. I pause here to take questions or any comments, any thing that might be of importance.
Are there any Sudeshna. questions? जी जी जी. Someone is asking कि cardiac arrest के आने के cardiac arrest के कितनी देर बाद आप कर सकते हो this pumping system? मतलब तुरंत कितनी शुरू देर करें. तक तुरंत अच्छा शुरू करें? कितनी देर तक? अच्छा हाँ. करना चाहिए till the patient starts to move or starts responding. ये आइडियल है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं. इसीलिए हम बोलते हैं that you give chest compressions till further specialized help arrives, or till the patient starts to move, or till you are able to give resuscitation. मान लीजिए अगर आप exhausted हो जाती हैं और अगर आप नहीं continue कर पाती, then we always understand. You may not be able to continue giving chest compressions indefinitely, but chest compressions ideally need to be given till further specialized help arrives or the patient starts to respond. अगर मुझे एक theoretical answer देना पड़े, then I would say till the patient starts to respond or till you can feel a pulse. आपको पल्स फील करते रहना है, और अगर आप पल्स आ जाए तो आप चेस्ट कंप्रेशन बंद कर सकती. क्योंकि आप कंप्रेशन दे क्यों रही थी? बिकॉज द हार्ट वाज नॉट पंपिंग. इफ द हार्ट स्टार्ट्स टू पंप ऑन इट्स ओन, देन ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू गिव एनी फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. But practically that may not be feasible. For us, the most practical solution is that as soon as specialized help arrives, we obviously let the trained workers take over, or when the patient starts to respond, or as long as you are able to. If you are exhausted, if you are not able to, you can discontinue. This was the one question. I think I read one. Can it hurt the bones or the rib cage? No, it cannot. If you position your hand correctly. This is a myth which has long since been busted, but I'm very glad that someone brought this up. Ribs का तोड़ना मतलब टूटना during cardiopulmonary resuscitation, ये बहुत ही एक आपका जायज सवाल है. इनफैक्ट ये सवाल मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी था. At one point of time, we used to hesitate to give chest compressions क्योंकि हमें डर था कि कहीं रिब टूट ना जाए. बचे तो नहीं बचे पेशेंट, शायद सीओ हो जाएंगे रिब टूटने की वजह से. But now it has been definitely shown that if you position your hand correctly, आप रिब्स पे तो जा ही नहीं रहे हैं ना. You're not there on the ribs. If you have seen the video closely, then they showed you a diagrammatic representation of what the inside of the chest looks like. Ribs के जो हमारे bones हैं, जो दोनों तरफ ऐसे fish bone की तरफ फैले हुए हैं, वो साइड में. आप साइड में तो जा ही नहीं रहे. आप ब्रेस्ट बोन के ऊपर है, जो बिल्कुल बीचों बीच है, और आप बीचों बीच ही अपने हाथ रखेंगे. As long as it doesn't slide, it doesn't slip, and you follow the correct procedure, it will not hurt. Any further questions? I think I saw a raised hand. I'm not sure. There is one more question. Yeah, tell me. Anju ji is asking that what is the use of sorbitol medicine given to the patient? Sorbitrate. Sorbitrate, yeah. Sorbitrate. Sorbitrate is not indicated in cardiac arrest. Cardiac arrest, you have to understand. It's for heart attack, no? Yes. Cardiac arrest is an exceptional emergency where your heart has come to a standstill. Actually, there is always I feel like कि सबको अभी भी इनफैक्ट हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के अंदर. ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे सबके साथ. एकदम. तो इसीलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की. हो सकता है एक और 2 सेशंस इंटरेक्शंस लगे समझाने में, लेकिन हार्ट अटैक वो है जब हमारे हार्ट के नसें में कहीं पे ब्लॉकेज है. कार्डियक अरेस्ट वो है जब हार्ट हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल. नाउ in case of heart attack, if you say that do you have to take a sorbitrate, yes, the answer is a yes, and to an extent a no, because as per American Heart Association guidelines and latest studies, sorbitrate आप ले सकते हैं. आप एक sorbitrate टैबलेट अगर सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक जैसे हो तो आप उसको जीभ के नीचे रख सकते हैं. वो एक टैबलेट 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है जनरली. However, there is a disclaimer here, that is कुछ हार्ट अटैक्स में ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाती है, और सॉर्बिट्रेट फर्दर ब्लड प्रेशर को कम करता है, घटाता है. तो सॉर्बिट्रेट देने से पहले थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रखना चाहिए. हालांकि गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर पेशेंट को एम्बुलेंस आ गई हो या फिर कोई पैरामेडिक या नर्स वहां पे मौजूद हो तो वो लोग सॉर्बिट्रेट जरूर दे सकते हैं. अगर पेशेंट को सॉर्बिट्रेट लेने की आदत है या फिर डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है दैट सॉर्बिट्रेट आप ले सकते हैं अगर आपके सीने का दर्द बढ़ जाता है तो, then you can take one sorbitrate. इसे सबलिंगुअल बोलते हैं, मतलब जीभ के नीचे रखने वाला. वहीं पे वो मेल्ट होके दवाई रिलीज हो जाती है, और वो क्या करती है कि हार्ट की जो नसें हैं, जो आर्टरीज है, उसको थोड़ा सा खोल देती है ताकि हार्ट में ब्लड पहुंचता रहे. ये उसका मतलब ये उसका इंटेंशन.
लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि वो ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर देता है। तो अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है तो हो सकता है पेशेंट को और चक्कर आने लगे या फिर उसका ब्लड प्रेशर और कम हो जाए। तो अगर ऐसे पेशेंट को आप घर में सॉर्बिट्रेट दे रही हैं या फिर अभी भी एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने में कुछ टाइम है, तो आपके घर में आइडियली एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप रखिए। आजकल सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटलाइज्ड हैं और वो जो रीडिंग्स देती है वो काफी हद तक सही होती है। आप 10 मार्क ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, लेकिन आपको एक एवरेज आइडिया आ जाएगा। अगर आप उस ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखती हैं कि ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है, ऊपर वाला, we all know, right, there is an upper and a lower blood pressure. If the upper blood pressure is less than 90, do not give sorbitrate and contact your doctor immediately. Otherwise, yes, for a patient with suspected heart attack, you can give sublingual nitrate or sorbitrate. एक टैबलेट आप दे सकती है। रिपीट ना ही करे तो बेहतर है। वो रिपीट करने का जो है वो डॉक्टर आके देखेंगे, उसके बाद ही होना चाहिए। हेतल जी शायद कुछ पूछना चाहती हैं। आपने मुझे बोला कि सॉर्बिट्रेट टैबलेट से हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है। सो दैट मीन्स अगर इफ आई नो समवन जिसकी मुझे मालूम है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है और क्या नहीं है, आई कैन गिव इट टू देम। बट इफ द पर्सन इज अननोन एंड वी डोंट नो उसका if he's a high blood pressure patient or a low blood pressure patient, so it is advisable not to give any medicine, or we can give sorbitrate, aspirin or something like that. Okay, so that's an excellent question, Hetalji. Now, if you do not know what's the general blood pressure range of that patient, obviously I take it that it is also difficult for you to confirm that whether this is at all a heart attack or not. और सॉर्बिट्रेट हर चीज में आप नहीं दे सकते। सीने के दर्द के और भी कई कारण होते हैं। There are lots of reasons for chest pain. Heart attack is the most common amongst them. Ideally, in our country, where we do not have emergency response service and you do not get specialized help very quickly, giving sorbitrate should be left to the doctor's discretion unless and until it is a medicine that has already been prescribed. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो डॉक्टर के पास पहले जा चुके होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दे ऑफन राइट डाउन कि अगर आपको बहुत सीने में अचानक से दर्द उठता है और आपको अभी भी टाइम है हॉस्पिटल तक आने के लिए, आप SOS एक सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं। तो उन इंस्टेंसेस में इट इज अ लिटिल सेफर टू गिव द सॉर्बिट्रेट, बिकॉज as I must say, heart attack presents with chest pain, but every chest pain is not heart attack. तो ये थोड़ा सा डिस्कशन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, but overall, as a rule, if you have an idea about what the patient's blood pressure is like, and you have had previous contacts with your physician, and there has been an empiric advice that you can give sorbitrate sublingually if there is any instance of increased chest pain, then you can do it. But it is always better to give this medicine under some form of medical supervision. और कोई सवाल? एक्चुअली मेरा चोकिंग का भी एक है थोड़ा सा कंटेंट, लेकिन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम. So I maybe... had a question, Dr. Sudeshna. Yes, please. You had mentioned trained. You use the sentence if you are trained. If somebody is trained in this, so where can we get such training? Okay, so I will say that on initiative of Kavita ji, you are having one such training right now. Besides this, you can also always organize such trainings. I mean, not you as in, there are such trainings which are being organized. Hospital से ये training organize की जाती है. Unfortunately, generally हम लोग क्या करते हैं ना, we catch the doctor population, we catch the nursing population, we catch the paramedic population, but the huge community population वो रह जाती है. तो अगर I really commend you, madam, on this question, because that tells me that you have interest in actually learning how to give chest compression, to take this training. So if you and ladies and like you, and I feel right, it is a necessity to make the younger generation also learn. Absolutely. Perfectly said. So if you are really interested in having a hands-on training, आज तो ये online है. When Nisha first contacted me for this, I had asked her, that is this online or is this on-site? So she said that no, this is online. So I've resorted to a video. But ideally, BLS छाती पे compression तो छाती पे हाथ रख के ही दी जाती है. So if ladies like ma'am who has just spoken to me and others, you have a group who are interested to have on-site session, do let me know. I can get in touch with hospitals and training groups who can help you with it.
We will be very, very happy to organize community training sessions for basic life support. In fact, it will be a pleasure, it will be a privilege to interact with all of you live. We have our mannequins, we have our systems. We will give you training material in advance. We will also expect you to read through them. And then we will take you through the training. और हम यहाँ पे नहीं छोड़ते, हम उसके बाद एक एग्जाम भी लेते हैं. तो हम एग्जाम भी ले सकते हैं आपका, और आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगी, and you will be a certified basic life support provider from AHA, which is generally, the referring body that we sort of, who's under aegis of whom we do these trainings. Of course, there is also European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council, New Zealand guidelines, but AHA, that's American Heart Association guideline, is the most popular and globally most pervading guidelines, which are very sound and very well researched. So again, it'll be a pleasure for me to interact with all of you to organize any such training. So do let me. Yeah, thank you so much for this. We've already got so many participants who are interested in the training. Perfect. Let's see if we can work this out. Absolutely. Please feel free to get in touch with me. I'll help you do this. It'll be my pleasure. Is any other questions? Yeah, I think there is. There is someone who has asked a very interesting and important question. I just lost that question. Where was it? Yeah. So is high blood pressure and high cholesterol precursor for heart attack? All right. May I understand who has come up with this question, please? I would like to interact directly with her. Yeah, Sachi Goenka. Oh, hi. So, yes. Now, this is a very intuitive question. High blood pressure and cholesterol are risk factors for heart attack. There's a difference between precursor and risk factor. Precursor matlab ye hota hai, uske baad something happens. Right. That's precursor. And there is something else called risk factor. So risk factor are those factors, agar wo मौजूद है, तो मेरे chances of having a heart attack increases. इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये नहीं है तो heart attack नहीं होगा. This is very important. लेकिन अगर ये है तो heart attack के chances बढ़ जाते हैं. उसमें high blood pressure, cholesterol बिल्कुल आता है. खास करके high blood pressure. क्योंकि high blood pressure, why? Because high blood pressure, you think of the heart as a sort of a very advanced plumbing system. Plumbing का होता है ना, pump का motor. Right. And then you have those plumbing lines which brings water up. So here what is happening? The heart is pumping. Against what? Against our blood pressure. How will I pass blood into my brain? खास करके brain. क्योंकि brain is against gravity. दूसरा parts of the body is with gravity. नीचे जा रहा है, लेकिन brain में against gravity. So I have blood pressure which is basically acting against me. Is it against me? Not really. Because blood pressure is what sustains the flow. अगर मैं पंप करके छोड़ दूं और मेरा कोई प्रेशर नहीं हो तो वो जाएगा कैसे? So pressure is needed. But if the pressure rises, then the strain on the heart increases. So high blood pressure is of course an important risk factor for heart attack. Cholesterol is also been traditionally considered to be a risk factor for heart attack. Ideally, our cholesterol and lipid levels should be under control because क्या होता है ना, वो जम जाती है. Fat को जमने की tendency होती है ना. It all collects in the wrong places. One such wrong place is inside the arteries, inside the veins. तो heart की जो नस है, जिससे heart को blood पहुंचती है, वहां पे अगर fat जम जाए, तो जगह कहाँ बचेगी blood को जाने में, right? So these are of course all very, very important risk factors for heart attack. Thank you, ma'am. Welcome. Is shortness of breath in a just a second. I think I saw another important question. Where is it? Okay, is shortness of breath in a pregnant girl? Somehow I'm not able to read this entire question. Is all right, we should be concerned about it. Okay. So you're asking that whether we should be concerned about shortness of breath in a pregnant lady? Yes. All right. So there are lots of physiological changes. मतलब के शरीर में कुछ natural changes होती है pregnancy के वक्त. Pregnancy के वक्त क्या होता है ना कि हमारा जो पेट के अंदर का pressure है वो बढ़ने लगता है. और वहां पे मतलब अंदर you can understand there's a new life which is being produced. So that is another important factor.
So what happens is it causes a lot of pressure building within the system. The volume of blood that is circulating increases. As the girth of the abdomen increases, as the size of the baby inside increases, it causes upward pressure. तो कुछ हद तक shortness of breath हो सकती है. It is not that in a pregnant patient will always be short of breath, लेकिन जब वो exert करती है, मान लीजिए अगर मैं एक माला चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ और एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी चढ़ रही है, तो हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. और वो डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि उनकी बॉडी का जो अभी हार्मोनल बैलेंस है, जो उनके बॉडी का स्टेचर है, वो सारा कुछ इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज व्हेन शी वाज नॉट प्रेग्नेंट. So shortness of breath in a pregnant woman can happen due to a lot of reasons and not necessarily due to a heart attack. हालांकि कोई भी अगर shortness of breath होता है in a pregnant woman, especially towards the end, then you should always consult a doctor immediately. Dr. Sudeshna, there was one question that we missed Yes. from Sheetal ji. She asked that if a person experiences shortness of breath due to excessive fat below the diaphragm, so then how should we distinguish between वो cardiac arrest वाला है कि fat के कारण excessive fat? देखिए, cardiac arrest तो पहले नहीं है, वो heart attack होगा, what she's trying to say. And next is that if suppose someone is very fat, someone has a lot of fat in the lower part of the abdomen, etc. वहां पे हमको ये देखना है कि जो exertion वो normally लेती है, उस respect में उस exertion से ही उनको problem हो रही है या उस exertion से ज्यादा होने से problem हो रही है. There is something called shortness of breath with routine exertion, shortness of breath with less than routine exertion. मान लीजिए कि मेरा weight मान लीजिए 80 kg है, जो मेरे हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है. मैं एक माला चढ़ती हूँ तो मेरे सांस फूल जाती है और उसका मुझे कुछ नहीं हो सकता, अभी वो फैट जब रिड्यूस होगा. आज अगर मैं आधे माले में ही हांफने लगती हूँ या फिर सीढ़ियां भी मैं नहीं चढ़ रही हूँ, आई एम वॉकिंग ऑन इवन ग्राउंड एंड आई एम फीलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेड फ्लैग. See what is normal for yourself. If for yourself climbing one flight of steps with your current weight makes you breathless, then what you need to do is reduce your weight. Because like we want everything within the normal range in our lives, right? तो weight भी ज्यादा क्यों हो? Weight को भी normal range में होना चाहिए ना. तो वो अच्छा, खैर एक अलग डिस्कशन है, अलग दिन हम इस पे चर्चा करेंगे. लेकिन अभी जो मैं कह रही हूँ कि आप अपना नॉर्मल देखिए. Look at your own normal. Like for instance, I can give you my own example. Prior to COVID happening to us, I could climb 3 flights of steps without any shortness of breath. कोई प्रॉब्लम नहीं होती. उसके बाद COVID happened, and to me it happened thrice. 3 बार हो गया. अब क्या ही करें? उसको मैं अच्छी लगी शायद. So COVID happened by 3 times. After that, what happened? अभी तो अच्छा कुछ better हुआ है. There was a time when I could walk only 1 flight of steps up. Now there is no scientific basis for this, but it could be that due to the repeated viral infections which had happened, my tolerance level, my tolerance to exertion reduced. Now it's gradually normalizing. So for me, that was a red flag because I'm able to climb 3 flights of steps. Now I'm able to climb only 1. Same thing applies for any other patient also. Take it. Achha, I have something here. This means only high blood pressure, normal cholesterol levels are risk. No, Hetalji, I think this is Hetalji, right? Yeah. So sirf high blood pressure or cholesterol levels high risk factors nahi. There are many risk factors. One risk factor is age, which is non-modifiable. जैसे age बढ़ती है, risk बढ़ता है. उसका हम आप कुछ नहीं कर सकते. Age will increase. Another is race, ethnicity, and genetic makeup. उसका भी कुछ खास नहीं किया जा सकता. We as Southeast Asians and Indians are predisposed to having higher risk for heart attacks, for diabetes. उसका हम कुछ खास नहीं कर सकते. That's the ethnicity we are born in. Next is high blood pressure, diabetes, cholesterol levels, your level of activity, your weight. All of these are also risk factors for heart attack. Heart attack के ऊपर भी हम एक मतलब we can have a discussion. तो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, but as such these are 2 important identifiers. I spoke about them because a question came regarding them. क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड था तो मैंने उस बारे में बात की. लेकिन और भी काफी रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के हैं, कार्डियक अरेस्ट के नहीं.
Cardiac arrest can happen without any risk factors also. That is the difference between heart attack and cardiac arrest. अब आप बोल सकती हैं कि क्यों ये फिर होता है. जिस दिन शायद हम वो पूरा साइंस समझ जाएंगे, we will do a better job in predicting heart attack. We have AI now. AI तो हर चीज को predict कर रहा है. But AI has also not been very successful in predicting cardiac arrest as of now. But maybe as research develops further and we are able to get more understanding on causes and risk factors for cardiac arrest as compared to heart attack, we will be able to do a better job in predicting who are at increased risk for having cardiac arrest. वहां भी शायद हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि दिल की धड़कनें कब रुक जाएंगी, लेकिन रुकेंगी कि नहीं, इसका रिस्क फैक्टर कितना है, शायद उसका प्रेडिक्शन थोड़ा इजियर हो जाए. I'm not saying that there are no risk factors at present known for cardiac arrest. There are, but that's a more technical discussion which we might defer for another day. But as such, these are risk factors more for heart attack rather than cardiac arrest. But yes, heart attack can lead to cardiac arrest, which is something that I have, said right at the beginning. But there is a difference between the two, which also we need to keep in mind. There was another question from Ranjana ji that when a person is unconscious and we give water to them, so is it safe or risky? Because you don't know कि वो heart issue है कि sugar fall है. एकदम. It is quite risky because sugar issue है या heart attack है या क्या है वो तो है ही, मतलब वो point तो है. उसके साथ साथ और एक point ये भी है कि जब आप पानी दे रही हैं, मुझे swallow भी तो करना है. जब मैं unconscious हूँ totally, मैं swallow कैसे करूँगी? Swallowing is a reflex. It does not happen involuntarily. Like I am speaking to you, my heart is beating. I am taking breaths. My blood pressure is being maintained. These are autonomic functions. उसे मुझे करना नहीं पड़ता. लेकिन अगर मुझे swallow करना है तो मुझे रुकना पड़ेगा. I am not able to speak when I am swallowing. हालांकि हम खाना खाते वक्त भी बात करते हैं, और इसीलिए शायद हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाते वक्त बात मत कर. The scientific reason is this. It is very dangerous actually. So try not to put anything into the mouth. It can cause obstruction. It can result in that water moving into the lungs instead of into the stomach. So it is fraught with difficulties and risks. Thank you. Heart attack pain is not on the left hand. I'm glad someone asked this. Heart attack का pain बिल्कुल left में नहीं होता. Please forget Bollywood. ये बाएं तरफ सीने पे हाथ रखे गिरना, it is out of date. किसी भी हाथ में हो सकता है, हालांकि हाथ में पेन हो सकती है. अगर ये हार्ट अटैक है तो पेन छाती में हो सकती है, पेन नीचे की तरफ जा सकता है, दोनों शोल्डर्स में हो सकती है, दोनों हाथ में हो सकती है, पीछे गर्दन में हो सकता है. तो चारों ओर आपका पेन हो सकता है. That can happen, but not this. Can you just give me a minute, ladies? One minute. I'll just be back. This is such an interesting session that it can continuously go on and on. There are so many questions coming into mind. Absolutely true. Very interesting. More than interesting, it's very necessary. Very necessary, yes. And it's eye-opening, basically eye-opening for our own health, our own family. And वो training वाला चीज जो बोली है practically अपने ले सकते हैं. We can plan that. Yeah. We can plan And that. we haven't finished the session. This is just one part. Burn, choke. She was giving me an idea of choking with a. So we can do the same session. We can do the same learning session next time when we get a chance to do it. Yes. Yeah. Whenever We complete the entire course in a proper way. So that will be Dr. Sudeshna part 2.0. Yes. Yeah, the next session can be on choking and burning. Choking or Yes. Absolutely. वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Very frequent burning and all तो बहुत common है. But very nice session. छोटे बच्चों के साथ तो बहुत common है. Choking. अभी भी आधे लोगों का ये confusion रहता ही है कि heart attack and cardiac arrest कैसे different है. ये एक बहुत बड़ा question. Very frank, I came to know for the first time. cardiac arrest और heart attack अलग है. Correct. मैं same ही समझ रही थी. नहीं, same नहीं होते.
नहीं So this is what we came to learn, na? At least I did. This was an many eye-opener people. for me. नहीं, इतने क्वेश्चंस हम लोगों के अंदर है, चाहे वो 1 घंटा तक जवाब देते रहे तो भी सारे अटेंडेंस के क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे. इतने क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं. I am so sorry. It's fine. Actually, my daughter came back from school. I think we are, ladies all here, so you'll be able to understand. Absolutely. Sorry. Yes, I'm back. Tell me. Dr. Sudeshna, I just would like to ask you, like, are there any symptoms? Like you said, it can happen anywhere, anytime, that is okay. But is there any symptom or, like that, any signals that we get so that we get aware of that, we can feel like it is, we come to know, yes, maybe I'm heading towards a heart attack. Heart attack, yes. Heart attack, there are symptoms that you can see. For instance, as I said, reduced effort tolerance. Chest discomfort rather than pain. Heaviness across the chest. Particularly, say, suppose you've had a heavy meal and you're feeling a persistent chest discomfort. आप सो के उठी हैं, आपको सीने में ऐसा लग रहा है जैसे भारीपन है, या फिर उस भारीपन के वजह से नींद खुल गई है. Or say, suppose you had, यहाँ पे Bollywood completely incorrect नहीं है, suppose you had a heated argument or a stress, or you've gone out somewhere and you have faced a windy weather, stressful climb across the stairs, या फिर आप किसी site visit करने गई हैं, आप कहीं घूमने गई हैं, and you find that there is a persistent, feeling of shortness of breath. मान लीजिए आप कहीं गई, आ गई हैं, बैठी हुई हैं, तभी भी आपको लग रहा है जैसे सांस थोड़ी सी फूल रही है. Dizziness, सर का थोड़ा चक्कर आना. Sweating, कि आपको पसीना आ रहा है जब उतना पसीना नहीं आना चाहिए. It's not that you are in a very heated environment and you're getting a sweat, that's all right. But if say suppose you're sweating even while you're not exerting, या फिर ऐसी कोई खास environmental कोई exigency नहीं है, फिर भी आपको sweating हो रही है. Palpitations, जैसे लग रहा है कि दिल धड़क रहा है. दिल तो अच्छा धड़क ही रहा है, but वो धड़कना आपको एहसास हो रही है. You're getting that feeling that your heart is palpitating or beating. So these are all signs that can tell you that possibly there is something needs to be checked. Can I ask you something here, Dr. Sudeshna? Most of the symptoms right now you said ना, मेरे को बहुत सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी 2 बार कोविड होने के बाद. वो रात के समय मोस्टली ज्यादा होती है. एंड ये सारे सिम्टम्स मुझे होने लगते हैं. मुझे बीच में ऐसा हो गया था कि मुझे हर बार ऐसा लगता था कि कहीं ये हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है. पर अगर वो नहीं है तो आप अपोलो जाओ या कहीं भी जाओ तो आप एक लूप में जाने लगते हो, विच इज हम एसिडिटी की दवाई, लेकिन वो एक एंजाइटी रहती है कि सोऊं कि किसी को उठाऊं. मतलब ये बहुत सीवियरली हेवीनेस, द पेन, द एंजाइटी, पल्पिटेशन हाई, बीपी भी, जैसे हमारा एसिडिटी ऊपर जाता है बीपी भी थोड़ा ऊपर जाता है उस वक्त. मतलब वो ओवरऑल एक तो उस वक्त क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो आप मुझे बताओ. जी, पहली बात तो ये है that since you said that you have acidity, मतलब आपको पता ही है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं. You do things which will prevent the acidity from happening. You're understanding what I'm saying? यहाँ पे मिलावट इस चीज पे है कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है, गैस की वजह से हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो रहा है, बिकॉज these are all closely related symptoms. हार्ट अटैक के जो भी सिम्टम्स है वो एंजाइटी में भी होती है. You're not wrong. If I'm very stressed, if I'm very anxious, then I'll start feeling a compression here. I'll start sweating. I'll have palpitations. I'll have dizziness. I'll feel extremely anxious. तो ये सारे symptoms तो हो गए आपके. तो ये heart attack है, gastritis है, anxiety है. This is actually a problem. Now, what can you do? You can first do something that is take precautions so that your anxiety or your acidity part is addressed, such as have sufficient amount of water. Avoid very high, spicy, oily, fried meals at night. Make sure you've had your meal at least 1.5 to 2 hours before you go to sleep. Make sure you are positioned, or you're sitting, or you are lying down. Even if you're lying down, you're in a position that's comfortable, that prevents that acid from flowing out. आप थोड़ा सा 2 पिलो लगा के आप बैठिए अगर आपको लग रहा है कि acid irritations हो रहे हैं. If you're having a regular acidity issue, then you can always consult your doctor for them to prescribe you, advise you on some form of regular antacids that you can take. तो इन सब चीजों से, इन सब disciplines से avoid coffee at night, for instance, or tea. That I'm doing. Yeah. So with all of this, what you can do is you can rule out the acidity part. I mean, you cannot have both ways.
मतलब 2 + 2 4 हो सकते हैं, 2 + 2 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 और 4 दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते. So once you've ruled out or you've taken precautions for that acidity part, then you can go in for, like to evaluate whether there is any cardiac issue or not. These are very closely related issues. अगर आपको regular basis पे anxiety attacks हो रहे हैं, या फिर किसी कारण से आपको panic attacks हो रहे हैं, or if anybody is having any mental health issues, do not hesitate to reach out for help. These are also very, very important issues. इन्हें हमें ignore नहीं करना चाहिए. अपने आप में तो ये important है ही, and because our mind is what guides us. Perception is reality. Reality is perception. मेरी दुनिया वैसी ही है जैसे मैं perceive करती हूँ. So if I'm constantly in a form of stress and anxiety, my entire system suffers. Every organ suffers. So that also needs to be addressed. Here I would say that if particularly at night you're having persisting symptoms, please wake up your family members. क्योंकि वो भी आपका एक सवाल था, so I'm addressing that as well. Please do not keep it on yourself, because if the situation then aggravates further, unfortunately, भगवान ना करे, अगर ऐसा कोई situation है जहां आप उठाने के अवस्था में नहीं हो, तो फिर problem और ज्यादा हो सकती है. So don't let yourself reach that point where you cannot seek that help. So you seek that help sooner rather than later. And when you have an identified problem, such as a gastric problem, an acidity related problem, please take all the precautions that are needed to avoid it. जब वो सारे precautions लेके भी आप अगर देखेंगी कि वो problem जो का त्यों है, then you need to change. मुझे पता नहीं how many of you are avid readers of Agatha Christie. I was, in fact I am. So एक बहुत उनका famous novel में एक line था, do not twist the clues to suit your theory. Twist your theory to suit the clues. You cannot twist the diagnosis to, suit your symptoms. You have to see the symptoms and find the diagnosis which fits. और जहां तक evaluation वगैरह का सवाल है, I can understand that once you go to a doctor or a hospital, they will put you into a process loop. कि अच्छा आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी आपको करना है, वो भी करना है. That is there. But basic जो tests होती हैं, जैसे एक ECG हो गया heart के लिए, you can always get that done and see what it is like, what the situation is like. एक age के बाद, I feel that it is better to take precautions. It's better to err on the side of caution rather than to be sorry later. That is my understanding, or my take at least. I'm not saying that has to be followed, but this is how I would approach the problem. Thank you so much. Okay. So, here I Done think for today? we're done for today. I think Sarika ji asked a question which I would like to answer. This is the last one, I promise you, Kavita. So if there is a heart attack, will the pulse go up? The pulse can go up, the pulse can go down. दोनों ही हो सकता है. Heart attack में the pulse can go up as well as it can go down. It can go down. Okay. Problem है ना. Nature is not so easy to interpret. Absolutely. It depends on what type of heart attack you have. Heart attack के तो at least 4-5 प्रकार हैं. Correct. Again, that depends on which artery has been blocked. Oh, this is so. I am not going into very that. technical. Okay. Right. So I think we come to a close of this, right? So I take an opportunity to just summarize everything. So here we come to the end of the session. Thank you everyone for being a part of such an interesting and much needed session. Heartful gratitude to Dr. Sudeshna ji for giving us a precious time and knowledge about the basic treatment during medical emergency. I hope कि cafe members का question solve हो गया होगा, and each one of you have some takeaways from this session. It was a good interactive session with so much to learn. Last but not the least, thank you Kavita ji and the board members for giving us an opportunity to hold such a knowledgeable session. Before we end up, I would like to summarize few takeaways which we all have learned, that once before the patient is being taken to the hospital, the patient is away from the hospital, if the patient suffers from cardiac arrest, we should shake the shoulder gently, shout for help, and try to start chest compression in a proper way, in a way which is suitable, the ribs don't get damaged, and it is in the correct position. And we compress at least for 2 inches in depth,
100 compression per minute, and do not stop compression if they gasp. And we should give mouth to mouth breathing only if we are trained. And chest and breath compression at the rate of 30:2. So I think I could just summarize this much. And with this, we end the session, and thank you all. Thank you so much. And I must mention that you've summarized much better than most of our young medical graduates do the first time we talk to them. So my compliments to you, ma'am, and to everyone here. I can understand that this must have been totally new for a lot of you here, but the attention which I have received, the interest which is obvious, it has been a pleasure, a privilege to be here. And do let me know if any of you are interested or would want to participate or would want to organize an on-site session. I will try my best to help you out. Yeah, we would definitely connect with you for that. Kavita ji will connect with you for us. Absolutely. Absolutely. And we would also like to, do another session because we could not complete the burn and choking today. So whenever it's convenient, we can take your time and we'll conduct the session. Absolutely. It was a fabulously conducted session, Doctor, and so well explained in language which we all could connect to and understand, and also it was made so interesting with the way you spoke about Bollywood and other examples. Fabulous. Thank you so much from each one of us. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sudeshna. It is all just because you have come and teach in such a beautiful way. We grasp the knowledge in a wonderful way. All the things is because of you. It's mutual. आज वापस से पढ़ने का मन कर गया। अच्छा वंडरफुल साइंस आज वापस से पढ़ने का मन कर गया लग रहा है वापस से क्लासरूम में आ जाएं और क्लासरूम बिल्कुल जब आप लोग बोले I would be very interested to come back to this group. Wonderful experience.